ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक COGS, परचेजेस COGS, सेल्स सेल्स करके ही आएगा। क्लोजिंग स्टॉक COGS, office and administration expenses, selling and distribution and finance expenses. These are your operating expenses. ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। नेट प्रॉफिट, चलो लेट अस स्टार्ट। ये बहुत सिंपल है, इसको वर्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। आपका ईयर है 16 एंड 17। ओके, when I give homework I find that no one of y'all are sending me the homework done. क्यों पता नहीं, आई डोंट नो। कैन वी स्टार्ट? पर्टिकुलर्स, सबसे पहले आता है सेल्स। सेल्स का फिगर देखते हैं कितना है, 10 लाख एंड 20 लाख। ये हमारा ए है। लेस बी COGS। अभी COGS में देखते हैं क्या है। ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस और क्लोजिंग स्टॉक। लेट अस पुट ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का फिगर है 1,40,000 एंड 3,60,000। एड परचेसेस, परचेजेस है 7,90,000 एंड 16,30,000।
लेस, ये दोनों को ऐड करके फिगर निकाल लेते हैं कितना होता है, या डायरेक्टली माइनस करके तो सी ओ जी एस ही निकालेंगे, वैसे करते हैं एक्चुअली, वो इजी हो जाएगा। लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक देखो कितना है, 180 एंड 430, minus 1,80,000 and minus 4,30,000. Now let us find out what is the balance. So COGS is, B is your COGS and B is, can anyone tell me what is the answer? 140 plus 790 minus 1,80,000. That is 7,50,000. देखो सेम आ रहा है क्या आप लोगों का भी? Is it same? So sales is 10 lakh and 20 lakh. Cost of goods sold is 7 lakh 50,000 and 15 lakh 60,000. So your gross profit is C, that is gross profit A minus B is, how much is your gross profit? A minus B means 10 lakh minus 7 lakh 50,000, that comes to 2 lakh 50,000, and 20 lakh minus 15 lakh 60,000, that is 4 lakh 40,000. कोई कर रहा है या नहीं? I am unable to see your chats also. यस कर रहे हो, ओके। चलो अभी इसके आगे क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या आएगा? सेल्स, COGS, ग्रॉस प्रॉफिट, एड ऑपरेटिंग इनकम तो कुछ भी नहीं है, तो हम डायरेक्टली करेंगे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके पास क्या क्या है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, बी selling and distribution expenses, and C finance expenses. Chalo, let us see the figure. Office and administrative expenses 75 and 1,20,000. Selling and distribution expenses is 65,000 and 1,10,000. And finance expenses is 30 and 90. So total करेंगे इसका, total operating expenses. Let us find out total operating expenses कितना है, that is D कितना है? कौन कर रहा है? Anyone is giving me the figure?
थोड़ा लाउडर बोलो ना, आई एम अनेबल टू हियर यू। आज चैट बॉक्स भी नहीं आएगा। 1,70,000. ओके, सो 1,70,000 एंड 3,20,000 ये आया आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल बी। नाउ योर नेट प्रॉफिट इज, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं लिख के डायरेक्टली नेट प्रॉफिट लिखेंगे क्योंकि दिस इज लास्ट। नेट प्रॉफिट दैट इज सी माइनस डी, दिस इज लास्ट पार्ट। इसके आगे कुछ है नहीं प्रॉब्लम में, इसीलिए हमने इसी को नेट प्रॉफिट लिख दिया। 250 माइनस 1,70,000, 2,50,000 minus 1,70,000, that comes to 80,000, and 4,40,000 minus 3,20,000 is 1,20,000। तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। आई होप सो ये सब क्लियर है आप लोगों को। जस्ट हाईलाइटिंग दोज फिगर्स which were used for calculations। अभी कंपैरेटिव आपको याद है कैसे किया था हम लोगों ने कंपैरेटिव? किसी को याद है कि भूल गए? एनीवन? अनम्यूट करके बोल सकते हो तो बोलो। पहले हमको इंक्रीज डिक्रीज रुपीस निकालना है, फिर इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज निकालना है। इंक्रीज डिक्रीज रुपीस कैसे निकालेंगे? Current year minus base year. करंट ईयर माइनस बेस ईयर। सो 20 लाख माइनस 10 lakhs, करंट ईयर माइनस बेस ईयर, दैट इज 10 lakhs। अभी परसेंटेज निकालना है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 20, 10 सॉरी ये 10 लाख डिवाइड बाय दिस बेस ईयर फिगर इंटू 100। ये जो इंक्रीज डिक्रीज आया उसको डिवाइड करना है बेस ईयर के फिगर से और परसेंटेज आएगा। 10 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, या आप लोग परसेंटेज का साइन भी दबा सकते हो, तो इट कम्स टू 100%। खाली यहाँ पे रुपीस का साइन नहीं आएगा, ये क्योंकि मैंने अकाउंटिंग लिया हुआ है इसके लिए वो ऐसे आ रहा है। ओके, दिस इज 100%। सिमिलरली कैलकुलेट करो ओपनिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, 360 माइनस 140, 360 माइनस 140 दैट इज 2,20,000, और उसका परसेंटेज निकालो। 2,20,000 divided by 1,40,000 and percentage का साइन, इज इट करेक्ट? चेक करो सब लोग। यस, 157, 1.57 जिसने लिखा है उसने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया। सुप्रिया इंटू 100 करना है। सुप्रिया एंड वैष्णवी, आपने 1.57 जो निकाला है दैट इज विदाउट इंटू 100। करेक्ट। चलो नेक्स्ट परचेजेस का निकालते हैं। परचेजेस का निकालते हैं। 1630 minus 790, that is 840। परसेंटेज कैसे आएगा? करंट ईयर सॉरी इंक्रीज डिक्रीज डिवाइड बाय बेस ईयर इंटू 100, दैट इज 8,40,000
divide by 7,90,000 into 100. 8,40,000 divided by 7,90,000 into 100. Next, 430 minus 180, दैट इज 2,40,000, लेकिन उसमें माइनस का साइन नहीं आएगा। ये जो माइनस हमने लगाया है वो तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक वाला माइनस है। दैट कम्स टू 2,50,000। माइनस में नहीं आएगा, इट इज इंक्रीज खाली। 4,30,000 minus 1,80,000, that is 2,50,000, and percentage increase would be 2,50,000 divided by 1,80,000 into 100, that is 138.89. Cost of goods sold का increase decrease, that comes to 8,10,000, and percentage is 108. Next, gross profit 4,40,000 minus 2,50,000, that is 1,90,000. Percentage increase decrease would be 1,90,000 divided by 2,50,000 into 100, that is 76%. 120 minus 75,000, 1,20,000 minus 75,000, 45,000. Percentage would be 45,000 into 100 divide by 75,000, that is 60% increase. Similarly, selling and distribution के लिए निकालेंगे 45,000 इंक्रीज आया। परसेंटेज देखते हैं, करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर, sorry, increase decrease divide by base year into 100, and lastly net profit 40,000 increase, our percentage is 50%. Percentage is 50%. So this is how your profit and loss account works. समझ में आया? याद था कि भूल गए थे? आई एम रिपीटिंग अगेन। इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट करना है तो, इंक्रीज डिक्रीज अगर कैलकुलेट करना है तो करंट ईयर माइनस बेस ईयर, एंड परसेंटेज निकालना है अगर तो, अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालना है तो इंक्रीज डिक्रीज अमाउंट, इंक्रीज या डिक्रीज का अमाउंट डिवाइड बाय बेस ईयर into 100, दैट इज करंट ईयर। जो ये इंक्रीज डिक्रीज का अमाउंट आता है इसको बेस ईयर से डिवाइड करना है, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है।
देखो सेल्स इंक्रीज हुआ 100%, बट एट द एंड नेट प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ है, सिर्फ 50%। सेल्स के प्रोपोर्शन में नेट प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है यहाँ पे। सेल्स 100% इंक्रीज है, बट नेट प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ, ओनली 50%। नेट प्रॉफिट क्यों कम इंक्रीज हुआ, क्योंकि स्टॉक परचेजेस ये सब जो है वो बहुत इंक्रीज हुआ। इट इन expenses has increased more as compared to सेल्स 100% है, तो सारे एक्सपेंसेस जो है वो 100% से ज़्यादा है। इवन आपका सेलिंग फाइनेंस एक्सपेंसेस इज 200%। सो दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम करें। कैन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम? चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। This is again a comparative profit and loss account. चलो let us start. ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सब आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक अगेन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सैलरीज, रेंट एंड रेट्स, ऑफिस एक्सपेंसेस। दिस इज ऑफिस। रेंट एंड रेट्स इज अगेंस्ट ऑफिस। कैरेज ऑन सेल्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी एक्सपेंसेस, selling and distribution, advertisement, bad debts, all selling and distribution. Loss on sale of asset, non operating expenses. Provision for tax is tax. Interest is non operating income. याद है कि सब भूल गए हो? आई डोंट नो ये कितना आप लोगों ने याद रखा है। ये चैप्टर आपका बी ऐसा चैप्टर है जिस जो एक चैप्टर करने से इंसान पास हो सकता है। Only one chapter is sufficient to see that you pass in management accounting if it is a ऑफलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम में तो आपको सब चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। स्टार्ट करें? कैन वी स्टार्ट? 'This is problem number 8।
स्टार्ट करें? सबसे पहले सेल 6 लाख एंड 10 लाख। ओपनिंग स्टॉक 80,000 एंड 1,20,000। Purchases 3 lakh and 8 lakhs. Closing stock 1,20,000 and 3 lakhs. ये आता है 80 प्लस 3 लाख माइनस 120, तो इसको हम लोग स्मॉल 1 दे के रखते हैं। 380 माइनस 120 कितना होता है? 380 माइनस 120, 80 लाख, 80,000 प्लस 3 लाख माइनस 1,20,000, that comes to 2,60,000. डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये प्रॉब्लम में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 80,000 एंड 1 लाख, सॉरी, wages 1 lakh and 1,60,000. Factory expenses 80,000 and 1 lakh. अब ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस और वेजेस को हम लोग ऐड करेंगे। ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसको ऐड करेंगे। 260 प्लस 1 लाख, ये COGS आएगा आपको। दिस इज योर COGS। 260 plus 1 lakh is 360. 360 plus 80,000 is 4,40,000. And 620 plus 1,60,000 plus 1 lakh is 8,80,000. Now you have cost of goods sold and you have sales. Sales माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट इज ए माइनस बी। ए माइनस बी कितना होता है? 6 लाख माइनस 4,40,000 करो, कितना होता है? 6 लाख माइनस 4,40,000, 1,60,000 and 10 lakh minus 8,80,000, sales minus cost of goods sold, that is 160 and 120, 1,60,000 and 1,20,000। देखो आंसर राइट आया है क्या मेरा और आपका?
ऑपरेटिंग इनकम, ये प्रॉब्लम में कुछ नहीं है तो हम डायरेक्टली करेंगे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहले ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सैलरीज 10,000 एंड 12,000। नेक्स्ट, रेंट एंड रेट्स, 8,000 एंड 10,000। ये हो गया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब इसका टोटल निकालते हैं कितना आता है। दिस इज 18,000 एंड दिस इज 22,000। नेक्स्ट, selling and distribution expenses, second, selling and distribution expenses। क्या क्या है देखते हैं। Carriage on sales 12,000 and 10,000। Next, delivery expenses, delivery expenses, 6,000 and 3,000। Next, advertisement 15,000 and 10,000। Next, bad debts 1,000 and nil। अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल करेंगे। That comes to 10 plus 6 is 16, 16 and 15 is 31, 32,000, 25,000। सो ये आया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दैट इज डी इज इक्वल टू 1 + 2। ये जो आपने 1 + 2 किया है ना, ये 18,000 प्लस 32,000। Operating expenses 18 plus 32 is 50,000 and 22 and 25 is 47,000. Is it clear? Operating expenses
Operating expenses 18,000 plus 32,000. 18,000 ऑफिस था और 32,000 सेलिंग आया. सो 18 प्लस 32 इज 50. 22 एंड 25 इज 47,000. ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आया. ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करेंगे तो विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. दिस इज ई. ऑपरेटिंग प्रॉफिट, that is C minus D. अभी C माइनस डी, आपको C माइनस डी पता है. C कितना है? 160. 160 माइनस 50 करेंगे तो कितना होगा? 160 माइनस 50 करेंगे तो 1,10,000 आएगा. एंड 120 माइनस 47 करेंगे तो कितना आएगा? देखो, 120 माइनस 47,000 कितना आता है? सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 1,10,000 and 73,000. Is it correct? Is it correct? अभी इसमें ऐड करेंगे. ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है हमारे पास. नॉन ऑपरेटिंग इनकम दैट इज इंटरेस्ट. एनीथिंग on the credit side of profit and loss account is normally a non operating income. Let us see कितना non operating income. 500 and 500 and less. एक ही बार करके क्लोज करते हैं. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी एक ही आइटम है. लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 13,000 एंड 13,000. यहाँ पे लिखती हूँ मैं. लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट दैट इज 13,000 एंड 13,000. सो एड लेस करो कितना आता है? चलो मेरे को बताओ, व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? एड लेस करने के बाद डायरेक्टली टेल मी व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. दैट इज 1,10,000 प्लस 500 माइनस 13,000. 1,10,000 प्लस 500 माइनस 13,000 कितना है आंसर? 97,500. इज इट करेक्ट? एंड 60,500 करेक्ट है क्या? चेक करो. लेस टैक्स. प्रोविजन फॉर टैक्स वर्ड यूज़ किया था तो हम भी वही वर्ड यूज़ करेंगे. प्रोविजन फॉर टैक्सेस 38,000 एंड 28,000. So what is your net
profit after tax. Net profit after tax. चलो बताओ कितना आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. 97,500 minus 38,000. 59,500 and 32,500. So this is your net profit after tax. And here your problem वर्टिकल फॉर्मेट एंड्स. अभी हम लोगों को कैलकुलेट करना है इंक्रीज डिक्रीज. 10 लाख माइनस 6 लाख इज 4 लाख. 4 लाख का परसेंटेज निकालो. 4 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100. कैलकुलेट द परसेंटेज. कोई अनम्यूट करके आंसर दे सकता है. यस 66.66. 66 आया तो 67 भी लिख सकते हैं हम लोग. 1,20,000 minus 80 is 40. Current year minus base year. 120 minus 80, that is 40,000. Percentage 40,000 divided 50%. कितना. 50. 50%. correct. 8 lakh minus 3 lakhs. 5 lakhs. Percentage 5 lakh divided by 3 lakh. परसेंटेज कितना होता है. यस पुष्पा आंसर. जिसको आंसर देना दे कैन गिव आंसर. यस 166.67. करेक्ट. नेक्स्ट 3 लाख माइनस 120 इज 1,80,000. अब ये सब ओरली करने आना चाहिए. परसेंटेज कौन बता रहा है. परसेंटेज 150. माइनस 260. 620 माइनस 260. कितना आया. 360. यस वेरी गुड राहुल शर्मा. आपका इमोजी भी अच्छा है. परसेंटेज भी बता दो. Yes, I want to know the percentage also. 138.46. Okay. Wages 160 minus 1 lakh is 60,000. Percentage would be 60. 20,000. Percentage would be 25. 880 minus 440 is 4,40,000. Percentage increase is 100. चेक करो राइट है या नहीं. यहाँ पे जीपी रिड्यूस हो रहा है. 1,60,000 था, यहाँ पे 120 है तो माइनस 40,000. इज इट करेक्ट.
करंट ईयर माइनस बेस ईयर करोगे तो नेगेटिव फिगर आ रहा है -40,000। सिमिलरली आपका परसेंटेज भी नेगेटिव आएगा, दैट इज -25%। नेक्स्ट 2000 इंक्रीज, परसेंटेज 20, यहाँ पे भी 2000 इंक्रीज, परसेंटेज 25। यहाँ पे क्यों 25? क्योंकि यहाँ पे बेस ईयर 8000 है। 4000 इंक्रीज, कितना आएगा परसेंटेज? कैलकुलेट करो। 4000 डिवाइड बाय 18,000 इंटू 100, 22.22। 2000 इंक्रीज 20%, -3000 डिक्रीज है, -3000, that is -50%, -5000, that is 33.33, -33.33, -1000, that is 100%, 32 माइनस, ये आएगा -7000, परसेंटेज बताओ कितना आएगा? -7000 divided by 32,000 into 100, -21.88. This is -3000. That is -6%. I don't know whether the 6% answer is correct or not. Please check. Correct, ma'am. 73,000 minus 1,10,000 is -37,000. परसेंटेज निकालेंगे, -37,000 divided by 1,10,000 into 100, that comes to -33.64. नील, यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि there is no change. Comparative comes into picture only if there is change. नहीं है change तो even loss on sale of fixed asset में भी आप देखोगे तो there is no change, तो no increase decrease. Net profit before tax is decreasing by 37,000 and percentage -37.95. Overall profit has decreased by 10,000 and by 27,000. Overall profit has decreased by 27,000 and by 45%. अभी कोई मुझे इसका एनालिसिस बता सकता है क्या? लास्ट 1 मिनट आई एम गिविंग यू, मेरा ऑलरेडी शेड्यूल्ड लेक्चर है। देखो आपने सेल्स देखा था 66% इंक्रीज हुआ था। You could see your sales has increased by 66%. सेल्स इंक्रीज होने के बावजूद भी प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। What is the reason why the profit has decreased? प्रॉफिट क्यों डिक्रीज हुआ? Can anyone tell me? फटाफट कोई बता सकता है क्या? सेल्स तो इंक्रीज हुआ था फिर भी प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, रीजन इज व्हाट?
रीजन ये है कि ये प्रॉब्लम में सीओजीएस वाले सारे आइटम्स हाईली इंक्रीज हुए। अगर आप देखो तो परचेजेस 5 लाख इंक्रीज हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक जाने दो वो तो माइनस होता है, wages has increased 60% and even factory expenses has increased 25%. So expenses भी बहुत ज़्यादा increase होने की वजह से actually profit has declined. Okay, so this is what you need to understand. क्यों हम लोग comparative कर रहे हैं? To understand the analysis. और अगर हमने analysis नहीं समझा तो हमारा पढ़ के कुछ फायदा नहीं है। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप एमए कर रहे हो, इट इज वी आर डूइंग इट फॉर एनालिसिस, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द एनालिसिस पार्ट तो उसको करके कुछ फायदा नहीं है। ओके, सो आई वाइंड अप द लेक्चर हियर, थैंक यू वेरी मच। Again tomorrow we'll be having the lecture with a different timing maybe, but tomorrow again there will be a lecture. Okay, so see you all then, till tomorrow, take care, bye bye. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am.